Hello friends, welcome back to the series of lecture. This is the 10th lecture of the series of Indian Constitution. Now we start with the topic difference between secularism and secularization. Secularism तो आपको पता है, and what is secularization? Secularization is the process of promoting the secularism. देखो इसमें आइडिया ये है, इसमें दो चीजें हैं. आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो है, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस के साथ एसोसिएटेड होंगी. फॉर एग्जांपल से जब आप पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक पूजा करते हैं, दैट इज़ योर फ्रीडम ऑफ रिलीजन. बट जब पूजा करते हो तो उधर लाउड स्पीकर लगा देते हो. लाउड स्पीकर लगाने का क्या आइडिया है? द पर्सनल बेनिफिट ऑफ द दैट प्रीस्ट, उसको अलग रख दिया जाए कि दैट एडवर्टाइजमेंट हो रहा है उसका. तो उसके अलावा जो मंत्र उच्चारण होगा जितने एरिया में फैलेगा तो वो एरिया उतना शुद्ध होगा. दैट वाज द मेन आइडिया. सिमिलरली द अजान्स इन द मस्जिद, सो भजन कीर्तन अजान ऑल दीज आर डन ऑन लाउड स्पीकर्स. सो उसी प्रकार से कई जगह रोड पर मंच लगाकर, स्टेज लगाकर एंड भगवती पूजन रात भर होता है. उससे द पीपल्स आर ऑल्सो गेटिंग वॉइस इन देयर हाउसेज. सो मंदिर पे, मस्जिद पे, हवन में, इनमें जो माइक लगते हैं, आर यू नॉट डिस्टर्बिंग द पीपल एंड कैन द स्टेट कंट्रोल इट? मीन्स द पॉइंट इज, कैन द स्टेट कंट्रोल द अदर एसोसिएटेड, कैन द स्टेट कंट्रोल द अदर सेक्युलर things associated with the religious practices. फॉर एग्जाम्पल से आपने मंदिर के नाम पे खूब सारा प्रॉपर्टी इकट्ठा कर लिया. जैसे वैष्णो देवी में था, मुख्य पुरोहित ही हैड ए ह्यूज वेल्थ इन द नेम ऑफ टेम्पल. और जितने भी टेम्पल्स को देख लो आप, बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, सब पर हैं. एंड मकान, जमीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मंदिर के चारों ओर देख, गो ऑन स्प्रेडिंग and you have a huge amount of property. Then in that situation, can the state control the expansion of that property? Can the state impose taxes upon that property? Answer is yes. So secularization का एक dimension, the process of promoting the secularism. इसका जो दूसरा dimension है, that religious practices, since you have the freedom of religion, तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस से उसके साथ एसोसिएटेड जो सेक्युलर एस्पेक्ट्स हैं, सेक्युलर एस्पेक्ट्स मतलब नॉन रिलीजियस एस्पेक्ट्स, लाउड स्पीकर बजाना, जमीन कब्जा करना, एक्सेट्रा, दे ऑल कैन बी कर्टेल्ड बाय द स्टेट. जब आप आर्टिकल 25 पढ़ोगे तो देयर यू विल फाइंड दैट द आर्टिकल 25 इज सब्जेक्ट टू हेल्थ एंड मोरालिटी एंड other provisions of this constitution. So making the article 25 subject to the public health and morality in itself suggests that we are not allowing you the freedom of religion to any extremity. We are allowing it within certain domain. आपके पास freedom of religion है, लेकिन आप public health और morality को वायलेट नहीं कर सकते. आपके फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो सेक्युलर एस्पेक्ट है, जो कि प्योर रिलीजियस नहीं है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है. सो व्हेन यू टॉक अबाउट द प्योर रिलीजियस एस्पेक्ट्स, कंसीडर द एस्पेक्ट्स इन दीज थ्री सर्कल्स, फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द प्योर रिलीजियस एस्पेक्ट, फॉर एग्जांपल से एक हिंदू है. अब कोई हिंदू अगर पूजा करता है, he would do according to his rituals, that is पूजा करने के तरीके उसके होंगे जिस प्रकार से एक मुस्लिम नमाज पढ़ता है. सो हर धर्म का अपना अपना तरीका होता है एंड he would follow that. तो ये जो उसका अपना धर्म का एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन है, वो हर धर्म में होता है. that how to worship, how to do the puja, that will be falling in the first circle because it is a pure religious matters.
So this circle is very rigid, and in this circle the state cannot interfere. And in the second circle, things were fall uh, to those things which are associated with religious rituals and practices. For example, we have seen the playing of loudspeakers. So whenever you do that arti or whatever, so there you are using the loudspeakers, and thereby you interfere in the right to silence of, that is right to peace. तो right to peace में किसी और के में हम interfere करते हैं by that of another people. So do you have right to do that also? The point is that you have got the right to perform your rituals, and the state will not interfere in that. But the things which get associated with that, for example, processions निकलते हैं, जो जुलूस निकलते हैं for religious purposes, अलग अलग धर्मों के जुलूस निकलते हैं, मुस्लिम्स में ताजिया, मुहर्रम एक्सेट्रा, हिंदूज में दुर्गा पूजा के टाइम पर, गणेश पूजा के टाइम पर, रामनवमी के टाइम पर वो रथ यात्रा वगैरह एक्सेट्रा, एंड सिखिज्म में भी इसी तरीके से फॉर डिफरेंट रिलीजन डिफरेंट तरह के प्रोसेस निकलते हैं. सो ये प्रोसेशंस इज नॉट ए रिचुअल, it is not the essential part, it is not a ritual, because you are showing you are belong to this religion, and that is why you are performing. So that is not any essential ritual, and these kind of things at times block the roads sometimes. So these are the practices that are associated with the religious rituals, but they essentially in themselves are not rituals. So वो आपका second category में fall करेगा. That will fall into the second category. And third category में these are some irreligious aspects that is not fall under. They are not at all related to religions. For example, say किसी स्थान पर कोई मंदिर है और मंदिर के लिए उसके चारों तरफ की ज़मीन खरीदना, या मस्जिद या चर्च या गुरुद्वारा whatever, तो उसके चारों तरफ की ज़मीन खरीदना, या आश्रम है कोई उससे चारों तरफ की खरीदना, मंदिर में कोई चढ़ावा आता है उस चढ़ावे को मैनेज करना, उस चढ़ावे को यूज़ करना. चढ़ावा मीन्स मनी, मेनली टॉकिंग अबाउट मनी, और या फिर उससे रिलेटेड which can be converted into money like gold, silver, etc. So what is all that? That is not purely religious. That is irreligious and not connected with the religion, but still they are being done. अब हमारी सेकुलरिज्म की डेफिनेशन ये है कि धार्मिक मामलों में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा. The state will not interfere into the religious matters. And when you read Article 25, everyone had got the right to freedom of religion, conscience, profess, propagate, that is practices religion. So in that matters the state will not interfere. But when you are talking about the things associated with the religious aspect, तो उसमें एग्जाम्पल लेट्स सी, कोई मंदिर है या मस्जिद है या चर्च गुरुद्वारा है, एंड इन दोज द लाउड स्पीकर्स आर अटैच्ड, एंड उन लाउड स्पीकर्स पर काफ़ी लाउड वॉइस में द होल एरिया इज गेटिंग डिस्टर्ब, एंड आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके एग्ज़ाम है, कोई स्टूडेंट है, एंड ही गॉट डिस्टर्ब बाय दिस, एंड नेक्स्ट डे एग्ज़ाम में मान लीजिए किसी का यूपीएससी का एग्ज़ाम है, जुडिशियरी का एग्ज़ाम है, फाइनल स्टेज है, एक दिन पहले उसके बगल में कुछ इस रिलीजियस एस्पेक्ट से या फिर कुछ ऐसी फंक्शन हो रहा है, देन ही गॉट डिस्टर्ब. अगर उसको सोना होगा तो वो सो नहीं पाएगा, पढ़ना होगा तो पढ़ नहीं पाएगा, फुल कॉन्सेंट्रेट होगा. सो देन ही इज हैविंग ए राइट टू बी रिमेन इन पीस. उस किसी भी व्यक्ति का अगर एग्जाम ना भी हो, बट एट सर्टेन टाइम्स अगर सिचुएशन ऐसी ना हो तो राइट्स एडजस्ट करना इज
the person could adjust. But इस सिचुएशन में एग्जाम वाला एग्जाम्पल लेते हैं, देन इस सिचुएशन में यू मे कॉल द 100 नंबर पुलिस एंड if first you request them, अगर वो नहीं मानते हैं, then call the police officials and they will take the strict action against them. So they cannot be allowed. This is one aspect of the secularization, that in the name of religion you will not be allowed to disturb the others and do violate the right of the others. Similarly, वो जो property related to that मंदिर, मस्जिद and all that is a religious aspect अगर खरीदना वगैरह, imposing taxes upon them, putting regulations upon them, upon the affiliation of property, etc. So that is the process of secularization. So what I want to tell you is secularism is my feeling towards you and your feeling towards me belonging to different religion, how I look at you. So that is manifest in my outward behavior, and that is secularism. And secularization is limiting secularism या limiting religion to some confinements and not allowing freedom of religion to violate the rights of the others. In fact, ये वाला जो एरिया है pure religious aspects, pure religious practices, इसको भी हम curtail करते हैं. Otherwise we say that in the pure religious practices the state cannot interfere, but we are limiting that also, because Article 25, subject to public health, morality and other provisions of the Constitution, a person has the freedom of conscience, profess and propagate practice. So ये जो आपका freedom of religion, of profess, propagate and practice है, ये भी subject to morality है, public health. It is subject to public order, morality and health and other provisions. For example, say in Jainism, there is a person, Mukhya Babaji, Nagambars. He walk around, without clothes, and he is surrounded by several his disciples, Anuyayis, when he is walking. So ये दिगंबर बाबा रहते हैं, that is surrounded by several his disciples, then he walk. So can the state curtail that kind of thing? The answer is yes. और इसी वजह से जो उनके disciples हैं, they walk around, घेरा बनाकर उनको घेर कर चलते हैं, so that it would not go into the public view. इस वजह से वो ऐसा चलते हैं, otherwise it would be curtailed. So अपने धर्म के अनुयायियों के बीच में तो वो ऐसा कर सकते हैं, but when they come to public view, then there you should be covered by something all around, or there may be people around you, so that they will not be visible in that manner. अब इस एग्जाम्पल में हेल्थ तो नहीं है, हेल्थ और पब्लिक ऑर्डर तो नहीं है, बट मॉरलिटी में के दायरे में लाकर कहीं ना कहीं ऑप्शन टी के वजह से कहीं ना कहीं लाकर उस दायरे में लाकर उसको कर्टेल कर सकते हैं. और सिमिलरली इन मुस्लिम्स जुलूस निकलता मुहर्रम में जो ताजिए वगैरह, तो उसमें अपने आप को मारते हैं, और दैट कुड बी कर्टेल्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ हेल्थ, सिंस दे आर डूइंग इन द जुलूस एंड द पीपल आर देयर बिलोंगिंग टू सेम रिलीजन एंड प्रोसेशन आर देयर. So normally the state will not interfere. The state is aware of that, but still they are not normally interfere. But if it takes to the massive proportion, then can the state stop him? Answer is yes. And similarly various places समाधि लेते हैं लोग, तो समाधि लेने से आपको रोका जा सकता है, because that affects your health, because you are not having right to commit suicide. आप जिंदा हो and you are not having right to kill yourself. Now your religious practice tells that while you are alive, take samadhi, you can take samadhi, but still it could be curtailed by state. But state will normally not interfere, because they give that much space to religious practices. But अगर extreme case हो, for example 100 लोगों ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि हम समाधि लेने वाले हैं, और पूरी जनता वहां पर है, हजारों लाखों की संख्या में लोग हैं, then that will give wrong signals.
that may give wrong signals. Even though धार्मिक रूप से if you are having different feelings, but ultimately it is giving wrong signals that one can kill himself by performing the religious practices. So the state can stop that. So the point is that it is not the second and third category which can be curtailed. It is the first category also which can be curtailed. And it is very manifestly written in Article 25 in the column of subject to health and public order and morality and other provisions of this constitution. तो ये भी तो सेकुलराइजेशन प्रोसेस हुआ. Secularization here means what? It means that not getting the religion exploited. Not getting the religion to be exploited. Fundamental right of religion है आपके पास. The state will not interfere, but not allowing any person to use that freedom in an exploitative manner, ताकि दूसरों के राइट्स को आप वायलेट कर सको. That is also called secularization. अब जो सेकुलराइजेशन का जो दूसरा डायमेंशन है, द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग, दैट इज ऑल्सो सेकुलराइजेशन. सो द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग में द प्रोसेस ऑफ टीचिंग. प्रमोट कैसे करेंगे? बाय टीचिंग, गिविंग वैल्यूज ऑफ देयर रिलीजन और पर्टिकुलर धर्म या फिर किसी के अनुयायी होंगे उसकी टीचिंग्स को प्रमोट करेंगे. सो दैट इज ऑल्सो वन एस्पेक्ट ऑफ secularization. So in Indian culture, in the families, the most of the families, or we can say that major of the families, we are teaching to our children the stories of the various religious saints. So the children or these families brought up like that, and similarly, slowly they grown up by such kind of view, and they teach their children also these stories. So that is, they are promoting, they are educating them. So ultimately, generation wise, the spreading of the message of secularism is going on in one part of India. That is, the major population of India is doing such kind of process or adopting that process. So that is the way of life for us. So secularism is the feeling of one for the other religions towards others' outward behavior, and for that the state can run programs, but the private individuals can also do themselves for that. For example, in a particular religion, if it is taught that you do particular rituals or certain things in our religion like this, like that, but also do not teach them that you will not disrespect the other religions also. अगर उनको ये टीच नहीं करते कि तुम दूसरे रिलीजन को रिस्पेक्ट करो, और तो ये भी टीच नहीं करते कि डिसरेस्पेक्ट करो. एंड बाय लुकिंग द अदर rituals of other religion, if the children or that person do some kind of going in their dharma sthals, then you are teaching them the secularism. But अगर आप उधर उनको रोको that no, we are not, we are of a particular religion and our religion teach us that do not respect their rituals or their religion, then you say that you are not secular. Then it could be say that you are anti-secular. For example, say a Hindu person goes to temple also, he goes to Haji Ali also चादर चढ़ाने के लिए, he goes to अजमेर शरीफ की दरगाह also, he goes to Amritsar Golden Temple also. Then you can, any person is going and if respecting such kind of things and doing such kind of rituals of other religions also, then you can say that he is secular. It shows his act shows that he is secular kind of person. So secularism is a way of life. It is not one thing which can be imposed upon you. It is a matter of feeling. आपके ऊपर फ्रीडम ऑफ रिलीजन इम्पोज कर सकता है कुछ गलत सलत करने से लिए रिचुअल्स के नाम पर, या फिर ऑल दीज थिंग एसोसिएटेड विद दैट, उसको करने से रोक सकता है, लेकिन सेक्युलर होने के लिए आपके साथ कोई कैसे जबरदस्ती कर देगा. सो सेक्युलरिज्म कैन नॉट बी कंपेल्ड. फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज समथिंग विच इज विद इन यू. You worship, you are free to worship.
you are free to follow your rituals. But secularism is that thing which is manifested in your outward behavior. There are several aberrations in India. Many people have radical kind of thinking in different religions, but these are only aberrations. These are not the general way of life in India, and that is what is secularism. And the process by which you make a person secular, the process by which you spread the idea of secularism or instill the idea of secularism is the process of secularization. तो ये दो चीज हो गई, एक तो हो गया curtailment और एक हो गया process. So write down secularization means the instilling of the secular feelings into a person. The process by which the secular feelings are instilled is called secularization. Secularism cannot be compelled, it can be promoted, that is encouraged. The other dimension of secularization is the curtailment of the irreligious aspects, of freedom of religion, and also curtailing certain activities which are associated with religious practices, but in themselves are not pure religious rituals. In fact, Article 25 makes even the freedom of religion subject to public order, health, morality, and other fundamental rights. So, आपके जो धार्मिक प्रैक्टिसेस से रिलेटेड बाकी के जो एस्पेक्ट्स हैं उसको तो कर्टेल कर ही सकते हैं, जो सेकुलर प्रैक्टिसेस हैं, सेकुलर एस्पेक्ट्स हैं, बट आपकी धार्मिक प्रैक्टिस को भी हम कर्टेल कर सकते हैं. सो आप अगर धर्म के रिचुअल को फॉलो करते हैं और उसमें कुछ ऐसा एक्टिविटी करते हैं जो पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ या मॉरलिटी को अफेक्ट करे या फिर किसी और के फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करे, देन टू दैट एक्सटेंट योर रिचुअल practices also can be curtailed. Your ritual practices and activities can also be curtailed. But agar it will not affect public order, health and morality and other fundamental rights of other people, then the state will not be allowed to interfere in it. So freedom of religion आपको दिया तो है, but it is not absolute. So it can also be curtailed on these grounds. Now the question is, why are you making freedom of religion subject to public health, order and morality, public order, public health, morality and other fundamental rights, etc. of the constitution, other provisions of the constitution? Answer is so that one person's practices the religion do not affect the rights of the other person's religion or rights of the other person. तो अगर ऐसा है तो फिर राइट टू इक्वालिटी को भी लिखते आप, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. राइट टू लाइफ को भी लिखते आप, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. सो आर्टिकल 21 में तो कहीं नहीं लिखा ये चीज, बट आर्टिकल 25 में क्यों लिखा है? सो द आंसर इज, इंडिया इज ए मल्टी रिलीजियस सोसाइटी, और एक रिलीजन में ही कई पंथ हैं, अलग अलग पंथ हैं. पहले तो मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है इंडिया, और एक रिलीजन में अलग अलग अनुयायी भी हैं एक ही धर्म में. सो एवरीवन इज हैविंग द डिफरेंट काइंड ऑफ criteria of their rituals, doing rituals, worship, and our experience suggests that many of these rituals are such which will affect the rights of the others, which will affect the public health and morality. So वो हमारा जो experience है वो suggest करता है. So if we allowed religious practices and the rituals in the absolute term, then many of these rituals and practices may result into the violation of the fundamental rights or health, public and morality. So हम खाली ये कहकर संतुष्ट नहीं हो जाएंगे कि it is given because so that other fundamental rights of other people also affect. But we also say that we are having certain experience because
that will affect the public order, health, and morality. Certain kind of rituals are there into the society. That's why it is specially written that it is subject to public order, health, morality, and fundamental rights of others. It was practical empirical experience on the basis of which we have curtailed that. अब ऐसा नहीं कि 21 में नहीं लिखा है तो 21 इज एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट, 21 में भी आप कर्टेलमेंट करोगे, लेकिन वहां पर अलग से लिखने की जरूरत महसूस नहीं हुई. बट रिलीजन में वी हैव गॉट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस सच एज सती प्रथा, तांडव डांस, दासी प्रथा, इन मुहर्रम यूजिंग ऑफ वेपन्स, एंड सो डिफरेंट रिलीजन्स में देयर आर डिफरेंट रिचुअल्स. सो इसलिए by writing this we have left a scope to curtail all these rituals as and when the circumstances are fit. Similarly, bali dena, that is prohibited in several places in Hindu. So now come to Article 25. So let's see Article 25. Keep going to writing. Subject to public order, morality, and health, and to other provisions of this part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice, and propagate religion. You see that Article 25 gives you the individual freedom of religion. So write down these words. It gives the individual freedom of religion. Why it is important? Because when we see the Article 26, it gives the institutional freedom, and Article 25 gives you the individual freedom of religion. And it start with the subjection clause, subjection to the public order, morality, and health. ये हम देख ही चुके हैं. That why are we having this subjection clause? Because of the practical experiences, there are diverse kind of practices and rituals which may affect the public order, morality, and health, and the other provisions, and therefore we have put this restrictive clause in the article so that we can directly control them. अब एक क्वेश्चन अरोज होता है कि उसमें लिखा है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, एंड टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट. अब इसमें अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट लिखकर, क्या इसमें लिखकर आर्टिकल 25 को दूसरे प्रोविजन से सबसर्विएंट पोजीशन दिया है? आर दे गिविंग आर्टिकल 25 ए पोजीशन सबसर्विएंट लोअर देन ऑफ द अदर फंडामेंटल राइट्स? So ऊपर से तो लगता है the answer is yes, but actually the answer is no. The freedom of religion भी उतना ही important fundamental right है जितने बाकी के fundamental rights हैं, but the only situation they visualize is if that there is a deadlock in which the balancing of two fundamental rights is not possible. जैसे अगर deadlock हो जाए article 25 में and right to life में, then the freedom of religion is curtailed. So if there is conflict, suppose there is a conflict between Article 25 and 21, or say there is conflict between Article 25 or 19, then the normal approach तो ये होगा कि that we are going to balancing the two. ऐसा नहीं होगा कि अगर subject to लिखा है तो सीधा 25 को curtail कर दो. First of all, you are trying to balancing the two. And if you find out that balancing is not possible and there is complete deadlock between the two articles, then only you will go for restricting Article 25. Otherwise, this stipulation, this subjection clause does not create a lesser position to the freedom of religion as compared to the other fundamental rights. So, in the situations of deadlock, when the other fundamental rights are considered to be more fundamental than the freedom of religion, then a very limited restriction can be put upon Article 25. So write down a point in this. Merely by making Article 25 subject to the other provisions of Part 3
freedom of religion has not been given a position subservient, that is inferior, to the other fundamental rights. Practically, if there is a conflict of that kind, then the first approach should be to bring about the harmony between the two. And it is only when the harmony is found not possible that the freedom of religion curtailed to that extent. All the fundamental rights enjoy the same status, but in case of a deadlock, the other fundamental rights are believed to be more fundamental than the right to religion. So fundamental right of religion आपका इतना ही equal important है, but in cases of deadlock situation और कोई harmonization possible ना हो, then you will the right of religion. तब आप religion को curtail करोगे, and the other fundamental right will be given a proper space. लेकिन the first approach is always the harmonization. So मात्र ये लिखने से कि that subject to the other fundamental rights, that does not mean that in the cases of slightest encroachment you curtail the freedom of religion. So that will not be the case. दोनों का mutual balance होगा. आप दूसरा right को भी curtail करो थोड़ा freedom of religion को भी curtail करो, so as to bring about the balance. But if it is not possible, then you will go for the curtailing of the fundamental right to religion. But that also to be done only to the extent so that the conflict is resolved. So subject to public order, morality and health and to the other provisions of this part, all persons are equally entitled. So this word equally is most important. ये सब अपने आप लिखते रहना, because India is a multi-religious state, और इंडिया अगर multi-religious है, so obviously there is some religion which is in majority and some religion which is in minority. इंडिया में कोई एक धर्म मेजॉरिटी में होगा और बाकी के धर्म कंपैरेटिवली माइनॉरिटी में होंगे. सो माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी को फियर रहता है दैट कहीं हम सप्रेस ना हो जाएं, कहीं हमको साइडलाइन ना कर दिया जाए. सो दैट काइंड ऑफ फियर इज ऑलवेज बी देयर. एंड इफ दैट इज द केस, देन विल यू नॉट नीड to give assurance to them. And how are you giving the assurance? By giving them the fundamental right of religion and also declaring that all are having equal right of religion. मतलब आप अगर minority को belong करें या majority को belong करें, all will have the equal right to religion. State आपको unequal protection नहीं दे सकता. State has to give the equal protection to minorities also. Because जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, अपार्ट फ्रॉम द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट, गवर्नेंस ऑफ द पीपल एज ए रूल्स ऑफ गवर्नेंस, द मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट वाज दैट देयर आर प्रॉब्लम्स इन द इंडियन सोसाइटी, देयर आर सम रिक्वायरमेंट्स इन द इंडियन सोसाइटी which be to be taken care of. For example, you talk about social justice, there is backwardness, large scale backwardness, then individual diversities are there. So social and economic justice is required. Upliftment is required. Backward classes needed to be uplifted. So you claim Article 14, 15 and 16 for that. And there has to be a basic guarantee of to the individuals of life and personal liberty, because that is something which the individuals are deprived from the British time. So that guarantee was required. So that will provide by the Article 21. Similarly, India is a multi-religious society, and because of the multi-religious society, there may be feeling of fear in the minorities of India. Could be in anyone, but particularly in the minority. So there should be some provisions which gives them such as assurance. So वो assurance we get from Article 25. और आर्टिकल 25 में जो लिख दिया ना हमने वर्ड इक्वली, दैट गिव दैट एश्योरेंस दैट यू हैव इक्वल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज द अदर कम्युनिटीज हैव. उसी तरीके से आर्टिकल 30 में जो रिलीजियस 30 के लिए इट इज इम्पोर्टेंट दिस पॉइंट, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कम्युनिटीज, रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, जो रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं,
भाषाई आधार पर जो माइनॉरिटीज़ हैं या फिर रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में स्टेट लेवल पर जो माइनॉरिटीज़ में हैं उनको सिर्फ धर्म का फियर नहीं होगा, उनको ये भी डर रहेगा, ये भी फियर रहेगा अपार्ट फ्रॉम द रिलीजियस फियर, उनको ये भी फियर रहेगा क्योंकि हम माइनॉरिटी में हैं, हमारे बच्चे मेन स्ट्रीम में जा नहीं पाएंगे, उनको नौकरियां नहीं मिल पाएंगी क्योंकि उनको उचित शिक्षा नहीं मिल पाएगी. Our children are not maybe able to acquire good education for themselves because we are in minority and therefore they are not able to move in the mainstream for getting the jobs etc. And therefore they need another assurance, and that another assurance is not of only the religion freedom, that other assurance is of the education, that you have the right to educate your children. If you want to establish institution and you can educate your children so as to enable them to go into the mainstream of the society. So that is what provided in Article 30. So I am discussing the various purposes of these articles. सबका एक पर्पस होगा और सबका ओवरऑल पर्पस होगा कि इंडियन सोसाइटी में कहीं ना कहीं अगर कोई प्रॉब्लम है किसी में अमंग्स इंडिविजुअल्स तो उसको दूर करने का पर्पस. सो उसी तरीके से फॉर एग्जांपल देयर आर डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स in India. When some particular person go from one state to another state, they form groups. जैसे महाराष्ट्र के लोग दिल्ली में आए तो they form a group. And क्योंकि महाराष्ट्र में गणेश पूजा is of a certain kind of level that is not worshipped in Delhi. Similarly in बंगाल में दुर्गा पूजा is more famous. एंड उसका लेवल अलग है रेस्ट ऑफ इंडिया से. सिमिलरली छठ पूजा फ्रॉम बिहार. सो जब दूसरे स्टेट में जब जाते हैं तो दे फॉर्म द ग्रुप्स फॉर परफॉर्मिंग देयर पूजाज और रिचुअल्स. सो सिमिलरली इफ देयर आर स्मॉलर ग्रुप्स एंड दे वांट टू प्रमोट देयर लैंग्वेज, दे वांट टू टीच देयर लैंग्वेज टू अदर्स, they want to promote that language. So if the person wants to form such kind of cultural groups, what is the purpose of for that? The purpose is not anything negative. The purpose is कि हमारा जो कल्चर है उस कल्चर को इंटैक्ट बना के रखना, so that we are missing our homeland, the native place, and since they are in different states, they are missing their religious cultural programs and festivals. So they gather together and they will celebrate. So that is the purpose, and to take care of each other. So ये associations बनाने का, this is the purpose of different places. When the persons came from another state to another state, they form associations. There are maybe associations or may not be associations they form, but some kind of urge is there to promote their original culture of the place where they belong. They are all Indians, but they are belong to certain place. उसके लिए that you are having that urge to protect your culture, to protect your language. So आपको अपने local culture को protect करने का भी urge है, and that is there in Article 29. So what I am trying to tell you is your language, your script, your religion, education rights of the people of your religious community, all that has to be taken care of by various fundamental rights under Part 3, and many of them have been taken care in the form of positive rights under the chapter DPSP. So this is the broader approach by which the framers has framed the constitution. So the purpose of Article 25 was to do away with any kind of fear in the minds of any minority community. हालांकि that is also applicable to majority also, but by writing the word equally, they removed that fear of any person that is belonging to minority religious community, and he is assured that he is also have the equal right to freedom of religion as compared to the
persons belonging to the majority. इसीलिए उन्होंने वर्ड इक्वली शब्द का इस्तेमाल किया है. Then let's see here. All persons are equally entitled to freedom of conscience. What is conscience? That is inner faith. That is something which is within your mind. अंदर का faith, something which is in your mind. That is inner faith. Faith in your mind, that is inner faith. क्योंकि ये आर्टिकल धर्म से रिलेटेड है, तो आपको कुछ भी किसी भी धर्म पर विश्वास रखने का अधिकार, किसी भी धर्म के बारे में सोचने का अधिकार है आपको. आप अगर चाहो तो नास्तिक भी हो सकते हो. If you want, you can be a theist also. You can believe into any religion. And if you believe that there is no God, that is also okay. That is the freedom of conscience that you got. And if you have the freedom of conscience, then obviously, then the associates of that and the implications of that or the extensions of that will be found in the form of practices, rituals. Then you are being free to tell the others. You are free to tell the others that I am belong to so and so religion and these are the virtues of my religion. And if voluntarily done, if it is done voluntarily, lawfully if it is done, then even you are free to convert the people of other religion to your religion. Even convert the people of other religion to your religion. That freedom also you have got. उसी को इन्होंने लिखा है freedom of conscience, profess, practice and propagate. Right freely to profess, practice and propagate religion. Propagate means what? To tell the others that I belong to this religion and these are the virtues of my religion. These are good virtues of my religion. And profess करना मतलब दूसरों को बताना. Practice means to follow the rituals. Practice means to follow the rituals, to perform the rituals. And profess means to convey to others the characteristics of your religion and to tell people freely that I belong to this religion. That is professing. Practice means to follow the rituals of your religion. And propagate means to spreading. To teach the profess में भी आ जाएगा, but propagate means spreading, फैलाना. To spreading your religion means what? To telling the other people about your religion and telling the others the good virtues of your religion and thereby making them to follow your religion. So as long as you are doing that in a lawful manner, you are also having right to propagate also. Means you are also having right to convert the people into your religion. But it should be done lawfully. Under compulsion, under force नहीं होना चाहिए. Fraud करके नहीं होना चाहिए. For example से आप किसी को बोलो कि आप मेरे धर्म में कन्वर्ट हो जाओ, मैं पर हेड 2,000 रुपये दूंगा, तो दैट इज अपीजमेंट. क्योंकि वो अपनी मर्जी से कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, आप उनकी गरीबी का फ़ायदा उठा रहे हो और उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाकर आप उनको कन्वर्ट करवा रहे हो. सो दैट इज़ नॉट अलाउड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. आपने किसी से कहा कि आप मेरे धर्म में कन्वर्ट हो जाओ, हम आपको नौकरियां देंगे. दैट इज़ ऑल्सो नॉट लॉफुल. Lawful conversion means that you tell them this is my religion and these are good virtues of my religion and I think that you should also follow my religion, and therefore voluntarily without any kind of greed or compulsion the person converts into your religion. So that kind of propagation is allowed in this. So इस बात का conflict हमेशा से रहा है कि कन्वर्जन इज लॉफुली और नॉट. तो कन्वर्जन का एक तरीका है कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन डालो, जितने भी कन्वर्ट होने वाले लोग हैं उनका सब डिटेल्स भरो. देन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विल सेट अप ए कमीशन टू इंक्वायर वेदर दिस कन्वर्जन्स द पर्सन हु वांट द कन्वर्जन इट इज़ वॉलंटरली और नॉट. एंड इफ दे आर डूइंग वॉलंटरली देन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में कन्वर्जन होगा. So that is the process of getting converted. अगर उसको आप violate करते हो then it is unlawful conversion. So what I want to tell you that you are having the freedom
to think whatever you want to think, any faith you want to. You are having freedom to tell others about your religion. You have freedom to practice your religion, religious rituals, and you also having the freedom to propagate your religious religion, that is to spread your religion by telling the others the good virtues of your religion. But the conversions does not be forceful and by deceitful means. Now let's see the second clause. Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice. So इसको तो हम already discuss कर चुके हैं. This is the saving clause. You have got the freedom of religion, and in the secularization process, the state can the secularization process by which or under which the state can regulate the secular etc. activities. सेक्युलर हो, इकोनॉमिक हो, फाइनेंशियल हो, ये एक्टिविटीज़ कंट्रोल किए जा सकते हैं. बट प्योर फ्रीडम ऑफ रिलीजन में जाओगे, वहाँ पर पब्लिक हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी के बेसिस पर एक्सेट्रा के बेसिस पर कर्टेल हो सकता है बस. अदरवाइज द स्टेट इज़ फ्री टू कर्टेल the other activities associated with which are not purely associated with the religious matter. ये already हम देख चुके हैं. Then providing for social welfare and reform or throwing open of Hindu religious institution of a public character to all classes and sections of Hindus. Social welfare they are saying providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institution of public character to all classes and sections of Hindus. So this provision is basically to prevent the untouchability, because earlier it was पहले ज़्यादा था, now also in remote areas somewhere maybe there, that in temples certain group of peoples were not allowed because they are considered to be untouchables, and therefore the law now requires कि आप मंदिरों में किसी भी या फिर कोई भी रिलीजियस हिंदू इंस्टीट्यूशन हो, किसी भी हिंदू ग्रुप को अगर वो कोई व्यक्ति बिलोंग करे, उसको आपको उसकी एंट्री अलाउ करनी पड़ेगी. सो दैट इज़ द सोशल रिफॉर्म दे आर टॉकिंग अबाउट. मीन्स जो अनटचेबिलिटी आप प्रैक्टिस करते हो दैट कुड नॉट बी प्रैक्टिस एंड ऑल people are allowed to be entered into temples or religious institutions. अब they are saying about public institution of public character to all classes. So अगर किसी का private temple है, अपने temple बनाया उसने अपना, and once it is open for the public, even though it is not transferred on the name of the society, but if once it is dedicated to public, then thereafter one cannot stop certain classes of the Hindus from getting into the temple. सिर्फ इस वजह से कि आप फलानी जाति से बिलोंग करते हो, आपको मंदिर में अंदर आने से नहीं रोका जाएगा. अब इसमें सिर्फ हिंदूज के लिए लिखा है. अब जो दूसरे धर्म है, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, ऑल, उनमें या सिखिज्म में, तो उनमें हो तो क्या होगा. मीन्स अदर धर्म में अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होता है, उस कंडीशन में क्या होगा. अगर ऐसा होता है अदर रिलीजन में, देन दिस प्रोविजन ऑल्सो अप्लाई ऑन दोज रिलीजन्स ऑल्सो. अब हिंदूज क्यों लिखा है? मे बी ऑफ बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिकल रीजन्स, हिस्ट्री ऑफ हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस, जो हमारे हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस रहे, in that they thought that such kind of practices are done in Hindus only, not in Christians, Muslims, Sikh, and all that, Parsis and Buddhism. But अगर मान लीजिए उस टाइम एक्सपीरियंस नहीं था, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस की उनमें अनटचेबिलिटी है, बट इन फ्यूचर अगर ऐसा हो जाता है, अनटचेबिलिटी उनमें एक्सपीरियंस उनमें होने लगती है और उनको रोका जाता है, देन दिस प्रोविजंस ऑल्सो रीड फॉर देम ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल से अनटचेबल डिक्लेयर करके मस्जिद में जाने से किसी को रोक दिया जाए, चर्च में
या फिर गुरुद्वारे में, will not that be violation of the Article 25? So you must appreciate, even if the word Muslims are not written here, you have to go by the spirit of the section of the article. और स्पिरिट क्या कहता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन सबको बराबर है, चाहे वो किसी भी क्लास को बिलोंग करता हो, और किसी भी पब्लिक रिलीजियस प्लेस पर किसी भी व्यक्ति को सिर्फ उसके ग्रुप या जाति के आधार पर जाने से नहीं रोक सकते। वैसे भी एक्सप्लेनेशन 2 में तो सिख, जैन, बुद्धिस्ट वगैरह तो दे रखा है, पर मुस्लिम्स वगैरह नहीं है इसमें। सो दिस कवर ऑल। फॉर एग्जाम्पल, मुस्लिम्स में अनटचेबिलिटी शुरू हो जाए और मस्जिदों में जाने से उनको रोक दिया जाए किसी पर्टिकुलर क्लास को, देन इट वुड नॉट बी अलाउड, इट इज वायलेशन ऑफ this provision, this article, because that act of Muslims would be declared unconstitutional on basis of this, by looking at the spirit of the article. It is not the wordings, but it is the spirit, and spirit means that you cannot deprive any person only because of the class to enter into religious institutions, only because of that he is belong to a particular class. You cannot deprive them to enter. Now, suppose a situation arose, किसी मंदिर में किसी मुस्लिम को जाने से रोक दिया गया, या किसी सिख को जाने से रोक दिया गया, या फिर मस्जिद में किसी हिंदू, सिख या जैन को जाने से रोक दिया गया। Is it permissible under the constitution? Suppose a Muslim went to the temple and want to attend the आरती। अब आरती में बैठकर वो कोई रिचुअल्स नहीं कर रहा है, आरती में पंडित जी डूइंग द आरती, you simply sitting there and watching that and feeling good about it, just participating। अब मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल वैष्णो देवी साइन बोर्ड ने कह दिया होता कि दैट मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड, वॉज इट कॉन्स्टिट्यूशनल? अब अगर हम इस तरीके से देखें, इज इट वायलेटिव ऑफ दिस आर्टिकल? द आंसर इज नो, बिकॉज हियर इट डज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वन रिलीजियस पर्सन इज अलाउड टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ the other religion. That is not given here. So that is not directly violative of this article, but is it not broadly violative of spirit of secularism, and it can always be challenged. अब सपोज किसी मुस्लिम को या फिर सिख को किसी मंदिर में जाने से रोक दिया सिर्फ इस वजह से कि वो मुस्लिम है या क्रिश्चियन है या फिर एनी अदर रिलीजन पर्सन है, then it is violative of the spirit of the constitution, concept of secularism, and it can always be challenged. लेकिन अगर वहाँ पर कोई एक रिचुअल्स करना है जो कि सिर्फ एक हिंदू ही कर सकता है, then obviously they can be stopped at that time from doing that ritual, but they cannot stop from visiting the place and doing the normal worship or simply visiting the place. They cannot stop that person. He belongs to whatever religion. So on the basis of matter of religious rituals, you can discriminate कि किसी मंदिर में आदमी ही पूजा कर सकता है, औरत नहीं कर सकती, या फिर एक धर्म का ही करेगा। on that basis you can discriminate, but सिर्फ शौकिया तौर पर किसी को डोमिनेट, ह्यूमन को डोमिनेट करने के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन्स को, ग्रुप ऑफ पर्सन्स को, कि आप नहीं आ सकते बिकॉज यू आर ए लेडी और यू आर ऑफ डिफरेंट रिलीजन, ऑल दैट, नॉट बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीजन्स। अगर कोई रिलीजियस रीजन है देन यू कैन स्टॉप। इस पर एक सबरीमाला टेम्पल का जो इशू था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट, इन दैट द वुमेन्स आर नॉट अलाउड, सुप्रीम कोर्ट अलाउड देम बाय दिस जजमेंट, बट इफ the women's are not allowed for some specific reason, तो उसके context में जाना पड़ेगा why they are not allowed. So but because of mythological reasons, अगर कोई ऐसा हो रहा है अंधविश्वास की वजह से, then they are not denied. There are some mythological reasons in some places that due to the in menstruation cycle period the women are not allowed. So only because of myths the entry could not be prevented. So इस तरीके के कारण अगर हैं तो that is unconstitutional. But अगर यही बात अलग से अगर किसी रिलीजन में लिखी होती then you can stop from entering. So
generally you have to go for the religious reasons why the particular persons are stopped from entering. If the answer is related to religion, then it is constitutional, but if it is just a mythical myth, then then it is unconstitutional. If certain rituals, religious rituals require that a particular person or woman is not should not be there when certain rituals are to be followed, then it is fine. Otherwise, it is not constitutional. So otherwise अगर किसी जगह मेल डोमिनेंस के लिए सिर्फ रूल बना रखें, then it is unconstitutional. So read the Sabrimala judgment. Just the headlines you will go on by that. That is when it was bashed. जब तो काफी चर्चा में रहा था, इस पर क्वेश्चंस भी आए थे. Then also you go by it. Just go by the citations और किस चीज पर था, इस चीज को याद रखना mainly. Basically यही हुआ था एल्डस में, सबरीमाला में भी. So thank you for watching this lecture. That's it for this lecture. We will continue Article 26 in next lecture.